Welcome students. I hope you are doing well. Students, today we learn textbook English Leap into Language page number 5. Students, we learn page number 5. Student, first you have the activity A. Circle the words that have the double E sound spelled with y. स्टूडेंट इसमें वो कह रहे हैं ऐसे वर्ड्स को सर्कल करें जो कभी कभी लफ्ज़ के आखिर में जिन वर्ड्स के आखिर में य की आवाज़ डबल ई आती हो। जस्ट लाइक एज वर्ड्स है हमारे पास विंडी, एक्सरे, कॉपी, फनी, सॉरी, फसी, डे, बनी। स्टूडेंट्स अब हमने ऐसे वर्ड्स को सर्कल करना है जिसमें य की साउंड डबल ई आती हो। जस्ट लाइक एज विन डी इसमें भी डबल ई की साउंड आ रही है, इसको सर्कल करें। एक्सरे में डबल ई की साउंड नहीं प्रोनाउंस हो रही, हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। कॉपी में भी डबल ई की साउंड नहीं प्रोनाउंस हो रही, हम इसको भी कॉपी सर्कल नहीं करेंगे। आगे फनी में भी डबल ई की साउंड प्रोनाउंस हो रही है, हम इसको भी सर्कल इट। सॉरी में भी नहीं डबल ई की साउंड प्रोनाउंस हो रही, हम इसको भी सर्कल नहीं करेंगे। आगे फसी। स्टूडेंट फर्स्ट द मीनिंग ऑफ द फसी इज ज़्यादा नखरे करने वाला, ज़्यादा शिकायत करने वाला। फसी में भी डबल ई की साउंड प्रोनाउंस हो रही है, सो सर्कल इट। डे बनी में भी डबल ई की साउंड प्रोनाउंस हो रही है, स्टूडेंट्स को सर्कल इट। विंडी, फनी, फसी, बनी। विंडी, फनी, फसी, bunny. Student, next you have activity B. Add a to make a word in each graph. Students, look at these grapes. इसमें वो कह रहे हैं आपने वर्ड लेटर ए और ई पुट करके अपना वर्ड कंप्लीट करना है। स्टूडेंट फर्स्ट वी हैव ठ ए ख ए टेक, न ए म ए नेम, ख ए म ए खेम, ग ए म ए गेम, श ए ड ए शेड मीनिंग इज साया, ब र ए व ए ब्रेव मीन बहादुर, ख ए र ए खेयर, टेक, नेम, केम, गेम, शेड, ब्रेव, केयर। Student, next you have activity number 3C. Now choose any word from the grapes and use it in sentences of your own. Students, इसमें कहा गया है कि इन ग्रेप्स में से आप कोई भी वर्ड चूज करके उसका एक सेंटेंस बनाना है। I choose the word brave. Brave means बहादुर। I am a brave boy. I am a brave boy. मैं एक बहादुर लड़का हूँ। Learn workbook Leap into a Language page number 9. Students, first of all mention date and day. Mention date and date of that day. Okay. In the sentences below, replace the underlined words with a new words that have y as double e sounds and a sounds words. Write the new sentences using new words in the given space. You may use the word bank to help you. स्टूडेंट्स इसमें वो कह रहे हैं नीचे दिए गए जुमलों में हाईलाइटेड अल्फाज को ऐसे नए अल्फाज से तब्दील करें जिसमें य की साउंड जो है वो डबल ई की तरह हो और ए की आवाज़ हो। नए वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने जो हाईलाइटेड वर्ड है इनको रिप्लेस करना है नए वर्ड्स के साथ, और इसके लिए आपको वर्ड बैंक से हेल्प ले सकते हैं। ये वर्ड बैंक उन्होंने हमें प्रोवाइड किया गया है। स्टूडेंट फर्स्ट सेंटेंस है टुडे वाज अ फनी डे। टुडे वाज अ फनी डे, वी रिप्लेस द वर्ड फनी विद द वर्ड बैंक वर्ड्स। फनी, बेक्ड, मेक्स, बॉय, यमी, सनी, खे, यमी, सनी। So students, funny with replaced with the word sunny. Today was a sunny day. Funny, sunny. इसमें डबल ई की साउंड प्रोनाउंस हो रही है। Today was a sunny day. Students, put full stop at the end of the sentences.
Student, next sentence is, this jelly is too sticky. This jelly is too sticky. Students, we replace the word sticky with word bank words baked, makes, boy, yummy, and last word is cake. Boy, yummy. Students, so we replace the word sticky with yummy. This jelly is too yummy. This jelly is too yummy. Put full stop at the end. Student, next sentence is, Billy plays. Third sentence is, Billy plays with a little toy. So we highlighted word replaced with the word bank words toy, baked, makes, boy, and last word is cake. Toy, boy. Billy plays with a little boy. Billy plays with a little boy. Put full stop at the end. Fourth sentence. John saves the paper plane. John saves the paper plane. So we replace the word saves with the word bank word saves, baked, makes. John saves, makes the paper plane. Students, our last and fifth sentences. Yesterday I played a game at home. First we replace highlighted played word with replace with the word bank words played, baked, cake, baked. Yesterday I baked a game. So we replace this word games with cake. I baked a cake at home. Yesterday I baked a cake at home. This is all about of our lectures, and I hope you can understand it very well. Okay, thank you.